Good afternoon. So let's start today's session. Today we are going to start with incorporation of companies. So before I start with this new topic, is there any question you have? Is there any doubt you have in whatever we've discussed till now, be it the definitions or any other thing? Any doubts, any questions? Any questions in the definitions we've done or any other thing which we've discussed? So we've been discussing definitions since past 2 days and the basics. So if you have any doubt, please do ask, and then we'll start with a new topic, which is incorporation of companies. कोई question है तो जल्दी से पूछ लो. Okay, so since you all do not have any questions, let me start. मैं बोलना शुरू करती हूँ और फिर अब मैं questions पूछूंगी. आप लोगों के पास questions नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारे questions है, and I will ask you questions now. ये थोड़ा डेंजर साउंड कर रहा है, right? Okay, so today we are going to start with the second topic, which is a part of your syllabus, and that is incorporation of companies. Incorporation of companies मतलब क्या? Incorporation का मतलब क्या होता है? So in simple words, अगर मैं आप लोगों को explain करूँ incorporation of company मतलब क्या? Incorporation is nothing but the process of registering the company. अभी जैसे कंपनी फॉर्म हो रहा है तो हम सबको पता है कि कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा. So the process of registering the company is called as incorporation of company. तो incorporation मतलब क्या हुआ? Incorporation is the process of registering company or process of registration of companies. ठीक है. सो कंपनी जब एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपनी का. ओनली देन द कंपनी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. अभी फॉर अ कंपनी टू कम इनटू एग्जिस्टेंस देयर आर अ सर्टेन स्टेप्स व्हिच हैव टू बी फॉलोड. नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेप्स, आई हैव अ क्वेश्चन. सो मेरे पास एक क्वेश्चन है. आज की क्लास की शुरुआत ही मैं ना एक क्वेश्चन से करूंगी, और वो ये है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, मतलब आप कंपनी को रजिस्टर करने जाओ, उससे पहले सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? व्हाट इज दैट यू शुड हैव व्हेन यू आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, या फिर जब आप सोच रहे हो कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, तो वो क्या चीज है जो सबसे पहले आना चाहिए? व्हाट इज द स्टेप वन? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज स्टेप वन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज द स्टेप वन? So you are going to answer this. I am not going to answer this. And according to your answers, फिर देखते हैं कि मैं क्या आंसर करती हूँ. So what according to you is the step one when incorporating the company? सबसे पहले क्या लगता है कंपनी को incorporate करने के? You can think, take not more than 1 minute for thinking. So what according to you is required in order to start a company? So Arya says members. हाँ, मेंबर्स तो जरूरी होते ही हैं. मेंबर्स तो चाहिए ही कंपनी में, बट सबसे पहले मेंबर्स ही चाहिए आपको कि कुछ और भी चाहिए होता है? व्हाट वुड बी द स्टेप वन? मतलब आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो सबसे पहला चीज क्या है जो जरूरी है? व्हाट वुड बी द स्टेप वन? Members are required, no doubt. I'm not saying your answer is not correct. But my question is, what would be the first thing which would be required? Abhi, any inputs from your side? अभी मैं नाम बोल बोल के आंसर करने लग पाऊंगी. So it's better you answer my question. Otherwise, I can see your names in and I'll call out your names and you'll have to answer them.
अभी से आइडिया, आइडिया किस चीज का आइडिया, कि यू आर क्वाइट क्लोज टू द आंसर। नाउ एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना, ये वाला एड तो सबने देखा ही है और ये वाला टैगलाइन भी सबने सुना है। तो सिमिलरली अगर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है, एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ बिजनेस आइडिया, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस आइडिया इन योर माइंड, व्हाट बिजनेस आर यू गोइंग टू रन। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, पर कंपनी में आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, मतलब बस सिर्फ एक नाम की कंपनी खोल के रखी है, पर वो कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही है, कंपनी में कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, कोई मतलब है ऐसी कंपनी का। Is there any meaning incorporating a company wherein you do not have any business idea in your mind? If you do not have any business idea in your mind, अब company in first place incorporate कैसे करोगे? What are you going to write in the object clause of the memorandum if you do not know what is the purpose with which you are starting the company? So सबसे पहला requirement जो होता है वो है an idea. An idea is required. एक business idea की जरूरत होती है। अगर कोई आइडिया है ही नहीं आपके पास, तो आप कंपनी क्या खोलोगे? What are you going to state in the object clause of the memorandum if you do not have any idea of what is the purpose with which you are starting the company? तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला रिक्वायरमेंट आई वुड से इज अ बिजनेस आइडिया, और रादर आइडेंटिफाइंग द पर्पस विथ व्हिच यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी. Identification of purpose is very important, because if you do not know कि हम कंपनी में करने क्या वाले हैं, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करके करोगे क्या? तो सबसे पहले आता है बिजनेस आइडिया. अभी जिन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता है ना, बिजनेस आइडिया, say for example there are two there's a person, Mr. Kishan. अभी मिस्टर किशन ना एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था, बहुत सोच रहा था, और एक दिन ऐसे ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो मैं ना अपना एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. सो किशन, he got an idea and his idea was to start a garment manufacturing business. और ये क्या हो गया, ये हो गया किशन का बिजनेस आइडिया. अभी किशन सोचता है कि मुझे बहुत ही लार्ज स्केल पे ये बिजनेस रन करना है एंड आई वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. आई डू नॉट वांट टू डू इट इन पार्टनरशिप, आई आल्सो डू नॉट वांट टू डू फॉर्म एन एलएलपी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे तो भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है. तो यहाँ पे ये जो बंदा है मिस्टर किशन, ये जो इंसान है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर किशन को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है कंपनीज एक्ट में, और वो टर्म है प्रमोटर. जिसके दिमाग में आइडिया आया कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, बिजनेस आइडिया आया जिसके दिमाग में, और जो सारी स्टेप्स लेगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उस इंसान को हम बोलते हैं promoter of the company. See, it is not necessary that the promoter has to become a member in the company or the promoter has to be the director in a company. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. Promoter may become a member, he may not become a member in a company. A promoter is basically a person who conceives the idea of setting up, who conceives the idea of starting a particular business. So जब हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि प्रमोटर को कंपनी का मेंबर होना चाहिए या प्रमोटर को कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. So यहाँ पे जो मिस्टर किशन है, he is the person who has got the idea, and that is the reason why we call Mr. Kishan the promoter of the company. तो सबसे पहले तो आइडिया आना चाहिए, और जिस इंसान के दिमाग में वो आइडिया आता है, उस इंसान को हम बोलते हैं प्रमोटर. We call that person as a promoter. So the person who conceives the idea and takes all the necessary steps for the purpose of incorporation of the company, that person is called as a promoter. So ये जो मैं आपको बता रही हूँ, this is in layman's term, this is in a very simple language that हाँ आइडिया आया और जो steps for incorporation ले रहा है वो हो गया प्रमोटर. पर कंपनीज एक्ट ने प्रमोटर को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, और वो डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में.
So section 2 clause 69 gives us the definition of promoter, और उसमें specifically दिया हुआ है that in which situation we will call a person as a promoter in the company. तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, स्टेप 1 क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आया? ये समझ में आया? अरे भाई यस और नो तो लिखो, यस और नो तो रिप्लाई करो. See, I know you all are sitting here after having your lunch and लॉ का क्लास है, थियोरी सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है, बट लॉ के क्लास में बैठ के आपको अकाउंट्स के बारे में या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, लॉ की क्लास में बैठ के आपको लॉ के बारे में ही सोचना है. सो are you all clear with this concept, with this first step for incorporation of the company? First step क्या है? First step है simple, एक आइडिया आना चाहिए. There has to be an idea. So let's now have a look at the meaning of the term promoter, and उसके बाद में हम जाएंगे step 2. So the term promoter, the meaning of the term promoter is given to us in section 2 clause 69, and it defines promoter in the following manner. So promoter means a person who is being named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return referred to under section 92. Oh my god, we have two new terms here. One is prospectus and the other is annual return. अरे भाई ये सब क्या होता है, ये कहाँ से आ गया prospectus, कहाँ से आ गया annual return, इनके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो नॉट वरी, अभी समझ में आ जाएगा. सो क्या होता है ना, एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है. अभी से आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए या फिर आपने देखा होगा, इफ यू गो टू सम इंस्टीट्यूशंस, दे गिव अ डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा बुकलेट देते हैं आपको, जिसमें उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है. दैट इज व्हाट आर द सर्विसेज दे प्रोवाइड, हु आर द पीपल बिहाइंड, हु आर द फाउंडर्स, देन फाउंडर्स मैसेज, डायरेक्टर्स मैसेज, ऐसे बहुत छोटा बुकलेट होता है विद ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन. सो वो क्या होता है, एक बुकलेट है या फिर एक डॉक्यूमेंट है जो उस इंस्टीट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है. That document is doing not, what is it doing? It is only advertising, it is only giving you some information about that particular institution. It could be a college, could be a school, could be any random institution. आपने हर जगह देखा होगा एक छोटा सा बुकलेट आपको दिया जाता है, या फिर it could either be a one page thing or a flyer, it could be in any form. So what is that booklet doing? What is that document doing? That document is doing only one thing, and that is it is informing you, giving you information about that particular institution, and it is also informing you ki it is basically an advertisement about what are the services which that particular institution provides. Similarly, जब हम कंपनी की बात करते हैं, अभी कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है. अभी से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, न्यूली फॉर्म कंपनी है, वो कंपनी आपके पास आती है और आपसे पैसा मांगती है. ठीक है, आपसे किसी ने पैसा मांगा, से फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड ऑफ योर्स आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम यू. ठीक है, आपके फ्रेंड ने बोला, अरे भाई अर्जेंटली मुझे 200 रुपए चाहिए, आई वॉन्ट 200 रुपीज अर्जेंटली. तो सबसे पहला सवाल क्या होता है पैसे देने के पहले? Now don't tell me कि हम बिना पूछे ही 200 रुपए निकाल के हमारे दोस्त को दे देंगे, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, कोई any random person for that matter. If someone is asking you for money, don't you ask them क्यों चाहिए, क्या हो गया? This is the first reaction. This is normal human tendency, and this is the first reaction which you expect from anyone. करते हो कि नहीं, कि ऐसे ही जेब में से निकाल के दे देते हो 200 रुपए? कोई भी आके मांगेगा 200 रुपए एंड यू विल गिव इट टू देम विदाउट आस्किंग द रीजन, और विल यू आस्क द रीजन?
You will ask the reason, right? So अभी यहाँ पे आंसर नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल रीजन नहीं पूछेगा और ऐसे ही अपने दोस्त को पैसे दे देगा, है ना अभी? No, मतलब you will also ask reason, right? So whenever a person is coming to you and asking you for your money, you ask reason कि भाई क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए और कब तक वापस देगा, हाँ या नहीं? दिस इज द जनरल थिंग विच हैपेंस, राइट? तो सिमिलरली एक कंपनी जब लोगों से पैसा ले रही है, एक कंपनी जब पब्लिक से पैसा ले रही है, तो कंपनी को पब्लिक को ये तो बताना ही पड़ेगा कि कंपनी पब्लिक का पैसा यूज कैसे करने वाली है. यस, company you will have to inform the people of how the company is going to utilize their money. हाँ, वो तो पता करना ही पड़ेगा. और उसके अलावा भी कंपनी को ये फीचर स्टेट करने पड़ेंगे कि पब्लिक का पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है एंड इट इज सेफ विद द कंपनी. गिव मी अ मोमेंट. प्रोस्पेक्टस का हार्ड कॉपी भी होता है, सॉफ्ट कॉपी भी होता है. सो दोनों दोनों फॉर्म्स में होता है प्रोस्पेक्टस. विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल जब हम प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में जाएंगे. ओके, सो अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट एन एडवर्टाइजमेंट. Yes, sorry for the disturbance. Sorry for the problem. Yeah. So, prospectus is basically an advertisement wherein the company is informing the people of what are the things it is going to do, who are the people who are managing the company, gives details of the directors of the company, the promoters of the company, the operations of the company. कंपनी किस तरह आपका पैसा यूटिलाइज करने वाली है, वो सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड होती है. तो प्रोस्पेक्टस में ना प्रमोटर का नाम भी लिखा होता है. ठीक है, उन लोगों का नाम लिखा होता है जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी अंडरस्टूड हियर, द फर्स्ट पॉइंट ए जो बोलता है यहाँ पे, वो ये बोलता है कि प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर स्टेट किया गया है, who is identified as a promoter, who is named as a promoter in the prospectus of the company or the annual return of the company. So हर साल कंपनी के ऊपर एक रिक्वायरमेंट होता है, and that is the company has to file its annual return under section 92. That annual return has to be filed by the company within 60 days of the AGM. ठीक है, so कंपनी का जब AGM हो जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसके 60 डेज में कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है. अभी एनुअल रिटर्न में भी प्रमोटर का नाम लिखा है, तो अगर एक इंसान का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर स्टेट किया गया है, तो हम उस इंसान को कंपनी का प्रमोटर माने. सो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज बीन नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न एज देयर प्रमोटर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise. So the second point here states that promoter is a person who has control over the affairs of the company. He is a part of managing and controlling the affairs of the company, either directly or indirectly. It can be in the form of a shareholder or a director or any other person. So a promoter is a person who has some certain control, or he could be a person who has certain control over the management of the company or over the affairs of the company. The third point is he's a person in accordance with whose advice, directions, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. So द थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट ये बोलता है ये एक ऐसा इंसान है जिसके एडवाइस पे या जिसके इंस्ट्रक्शंस पे या जिसके डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं. सो ही इज द पर्सन हु गिव्स एडवाइस,
who gives directions and who gives instructions to the board of directors of the company, and the board of directors, they follow the instructions of this person. So that person, in accordance with whose advice the board act, in accordance with whose instructions the board act, that person is referred to as a promoter. So क्या हो गया promoter के बारे में हमने तीन चीजें दी. One is a person who is named as promoter in the prospectus or the annual return of the company. Second was a person who controls the affairs of the company. And the third one is basically a person in accordance who gives advice, or in accordance with whose advice, instructions, or directions the board of the company acts. The board of the directors of the company, they follow this person's advice, this person's directions, and this person's instruction. So that person is referred to as a promoter. तो उस इंसान को हम promoter बोलें. तो in layman's term we understood he is a person जिसको idea आया और जो इंसान सारे steps ले रहा है for the purpose of incorporation of the company. However, as per the definition which is being given to us under section 2 clause 69, we've understood that he is a person जिसका नाम prospectus में लिखा है as a promoter, या फिर who controls the affairs of the company, or a person in accordance with whose advice, instructions, or directions the board of directors act. अभी यहाँ पे there's one thing which you should know, and that is, say for example, a chartered accountant has given some advice to the board and the board has followed the advice. इसका मतलब ये हो गया ना कि chartered accountant is the promoter of the company. Yes or no? Say you as a chartered accountant have given some advice to the board of directors of the company, and the board of directors of the company, they have followed your advice. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो ये हो गया कि board of directors, इसका मतलब ये हो गया कि आप कंपनी के प्रमोटर हो. Yes or no? Do you think you will be the promoter of the company in such a situation? Definitely not. So if a person is rendering any services in his professional capacity, is giving any instructions in his professional capacity, is giving any advice or directions in his professional capacity, then that person will not be referred to as the promoter of the company. समझ में आया? Yes. Have you all understood who is a promoter? So if you look at the proviso here, the proviso states nothing in subclause C. Subclause C मतलब ये directions and advice वाला. Nothing in subclause C shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity. So अगर एक इंसान सिर्फ professional capacity में काम कर रहा है, it could be a banker, could be an accountant, could be a company secretary, could be anyone. He is acting in his professional capacity. He is given advice in his professional capacity. तो उस situation में उसको हम promoter नहीं बोलेंगे. Is that clear? Understood? Yes? No? Have you all understood this point? Okay. So अभी हो गया हमारा step 1. अभी step 2 पे जाते हैं. कौन था हमारे एग्जाम्पल का प्रमोटर? किशन. क्या बिजनेस कर रहा था? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था किशन. तो किशन को अभी ये तो पता चल गया उसको क्या बिजनेस करना है. ही हैज अ बिजनेस आइडिया विथ हिम. नाउ व्हाट वुड बी स्टेप 2? स्टेप 2 क्या होगा? What would be step 2 here? अरे कुछ तो बोलो. स्टेप 2 क्या होगा? देखो, it is okay, you just have to try and give answers.
हाँ इनकॉर्पोरेशन है, बट इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? Okay, so step 2 here would be members, and also ascertaining which type of company Kishan wants to start. So पहले होगा type of company, उसके बाद होगा number of members, because sorry, because the number of members will depend on the type of company which Kishan is starting. So now say type of company mein what Kishan will have to decide. Kishan will have to decide whether he wants to start a one-person company or a private company or a public company. Okay, so Kishan will have to decide whether he wants to start a one-person company or a private company or a public company. अभी वन पर्सन कंपनी है तो कितने मेंबर्स चाहिए? वन मेंबर. प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 members. पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7 members चाहिए. So here Kishan will have to ascertain which type of company he wants to start, and after ascertaining, OPC is a private company. OPC is not a public company. OPC is a private company. So first, Kishan will ascertain which type of company he wants to start, and on the basis of the type of company, अगर OPC start करना है तो फिर तो Kishan को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक nominee appoint करना पड़ेगा, which we have understood yesterday. But अगर if Kishan wants to start a private company or if Kishan wants to set up a public company, he'll want people with him. The private company में he'll have to bring in one more person as the member. एक तो वो खुद हो गया. He wants to become a member in the company. एक तो वो खुद हो गया. अभी उसके अलावा there will be requirement of one more person. If he wants to start a private company, there will be a requirement of one more person. And if Kishan wants to start a public company, तो उसको 7 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा. मतलब या तो खुद को इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके मिनिमम 7 people are required. So members इकट्ठा करना पड़ेगा, members जमा करना पड़ेगा किशन को, depending on the type of company which he wants to start. So step 2 क्या हो गया हमारा? Step 2 हो गया identifying the type of company Kishan wants to start and determining the number of members. और ये सब पता है requirement कहाँ दिया हुआ है about the minimum number of members? ये requirement दिया हुआ है section 3 में. Section 3 बोलता है if a person wants to start a private company, he can do so with minimum 7 members. So minimum 7 चाहिए या उससे ज्यादा. Private company के लिए minimum 2 or more than that. OPC के लिए only 1 member would be required. Only 1 member would suffice the purpose in a situation where a one-person company has to be incorporated. So let's have a look at section 3. So section 3, it deals with the basic requirement with respect to the constitution of company. तो basic requirement क्या है company के लिए? members. company में members होने चाहिए तभी company form होगी. So the basic requirement for the purpose of constitution of the company is definitely members. So minimum number of members is what does section 3 subsection 1 says? It say a company may be formed for any lawful purpose. Now this particular line emphasizes on a very important thing, and that is अगर आप company form कर रहे हो ना, तो it has to be for a lawful purpose only. It cannot be for any unlawful purpose or any illegal purpose. Whenever a company is being incorporated, it has to be incorporated with a lawful purpose. It cannot be formed with any unlawful or illegal purpose. And by how many? 7 or more persons where company to be formed as a public company, 2 or more persons where private company has to be formed, or 1 person where a company to be formed is a one-person company. So one-person company is also a private company only. It is not a public company. By subscribing their names or his name to a memorandum and complying with the requirements of the act in respect of registration. So the basic requirement for the purpose of
formation of company is the minimum number of members. So if a public company is being incorporated, minimum 7 or more. Private company, minimum 2. One-person company, only one person as its member. So ये जो minimum requirement है with respect to the number of members, say public company, private company, and OPC. Minimum number of members in a public company is 7 and in a private company is 2. अभी OPC में तो एक ही member होता है, तो OPC में there's only one member. And the memorandum of OPC clearly states that who shall become the member in event of death of the member of one-person company. But let's now talk of a public company and a private company. What will happen if the number of members in a public company or a private company go below the minimum requirement? मतलब क्या होगा अगर कंपनी पब्लिक कंपनी में 7 से कम मेंबर्स हो गए या प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर बचा, 2 से कम मेंबर्स हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन सच अ सिचुएशन? एनी आइडिया क्या होगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 मेंबर्स का है पब्लिक कंपनी में, बट 7 से कम हो गए मेंबर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन सच अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी हैव गॉन बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी तो बंद नहीं होगी, हमने समझा है ये बहुत क्लियरली कि कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, एंड सिंस कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन तो कंपनी भी तो बंद नहीं होगी, तो होगा क्या? कुछ तो होगा. मेंबर्स कम हो गए, बिलो मेंबर्स हैव गॉन बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा इसका. पर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्या लगता है कॉन्सिक्वेंस होगा? I'm waiting for your answers. I've asked a question to you. पता नहीं क्या हो. You cannot give these type of answers, हाँ. पता नहीं, ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को नहीं पता है क्या होगा, but if I'm asking a question, at least try and think over the situation. Practically अपने आप को उस situation में डाल के सोचो कि अच्छा कंपनी में कम मेंबर्स हो गए तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इसका? पता नहीं. तो वेरी सिंपल टू से आई डोंट नो, है ना. पता नहीं बोलेगे तो ये खुद ही आंसर दे देगी और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी. Okay, so in a situation wherein the number of members in a company they go below the minimum requirement, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? बेसिकली कंपनी के पास ना 6 महीने का टाइम स्पैन है. आप 6 महीने में ये जो भी हुआ है उसको रेक्टिफाई कर लो. मतलब से मेंबर की डेथ हो गई या मेंबर हैज बिकम इनकेपेबल, व्हाटएवर द रीजन इज, you have 6 months. Within 6 months you make sure that the minimum requirement with respect to the number of members is again complied with. But if you're not doing it within 6 months, 6 महीने हो गए, but आप 6 महीने के बाद भी अपना बिजनेस ऐसे ही चला रहे हो with less than the minimum number of members. So if after 6 months as well the company is running with members below the minimum requirement, तो situation में क्या होगा? उस situation में every member of the company, every director of the company who was
in cognizance of this particular thing, matlab who was aware that the company is running with the number of members below the minimum requirement. वो सारे लोग जो भी होंगे जिसको ये पता होगा, वो लोगों को पर्सनली लायबल बना दिया जाएगा फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी और फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी which have been incurred after 6 months. Let's understand this with the help of an example. Say there's a public company, say ITC Limited. अभी ITC Limited में on 1st of May, what happens is there were say 7 directors, there were say 7 members. Now on 1st of May क्या हो गया, ये member जो 7 थे वो 7 से कम होके हो गए 5. On 1st of May, the number of members have gone below the minimum requirement. 1st of May को क्या हुआ, जो minimum requirement था number of members का, it has gone below. The number of members have gone below the minimum requirement. तो अभी कंपनी को क्या करना होगा, company will have to make sure that it adds 2 more members because the number of members is below the minimum requirement. तो कंपनी के पास 6 months का टाइम स्पैन है and within 6 months the company has to ensure कि ये जो 2 members कम है वो 2 members और ऐड हो जाए within 6 months. So the act says we give you 6 months. 6 महीने का टाइम है आपके पास, आप अपना बिजनेस बंद मत करो, बिजनेस कंटिन्यू करो, बट 6 महीने में एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर एडिंग दीज 2 members. जो भी शॉर्टेज है यू एड दोज members. बट ये कंपनी 6 महीने हो गए बट फिर भी दे हैव नॉट एडेड दोज members and say it is 31st of October. From 1st of May 6 months come to 31st of October. 31st of October हो गया and on this date as well the number of members in the company is 5. They have not added those 2 members, members below the minimum requirement हो गए, तो भी उन्होंने जो minimum requirement है उस तक पहुंचने के लिए members को add नहीं किया. So the number of members have gone below, is below 7 and the company is running with 5 members only. तो अभी क्या होता है, 6 महीने का टाइम स्पैन था बट 6 महीने में भी कंपनी ने रेक्टिफाई नहीं किया ये एरर जो भी हुआ है, तो अभी आफ्टर 6 months the company is still running its business after 6 months. So whatever debts and liabilities are incurred here after 31st of October, उन सब चीजों के लिए जो भी पर्सन whoever was aware that the company is running with the number of members below its minimum requirement, that person shall be made personally liable. जनरली क्या होता है, मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है और कंपनी में सबका लायबिलिटी लिमिटेड होता है. बट अगर एक कंपनी में minimum number of members का requirement fulfill नहीं हो रहा है and the company is running for 6 months, after 6 months without complying with the minimum requirement, then the debts and liabilities which are incurred by the company after 6 months, every person who was cognizant, every member of the company who was cognizant of this offense, who had the cognizance of this offense, that is, who was aware of this particular thing, he shall become personally liable for the debts and liabilities of the company which have been incurred after the expiry of 6 months. तो यहाँ पे 31st October के बाद जो भी debts and liabilities incur हो रहे हैं उसके लिए जो भी person, जो भी member personally aware था about this offense will become personally liable. And all of this has been stated under section 3A of the Companies Act 2013. ये point समझ में आया आप लोगों को? Did you understand this point? इस पे बहुत एक अच्छी case study भी बन सकती है. Both for MCQ questions as well as theory questions. Here, let's have a look at section 3A.
So section 3A talks of the penalty if the minimum members criteria is not met. So if at any time the number of members of company is reduced, that is below 7 in public company, below 2 in case of a private company, and the company carries on business for more than 6 months while the number of members is reduced, then every person who is a member of the company during the time that it so carries business after those 6 months, and who is cognizant, that is aware of the fact that it is carrying business with less number of members, he shall be severally liable, that is he shall be individually liable or personally liable for payment of the whole debts of the company which have been contracted after 6 months, and may be sued for those debts as well. So कौन liable होगा? Every member, and not only member, but he should also be aware of the fact कि company कम members के साथ काम कर रही है. अगर एक member ऐसा है, say if this company it has 7 members, ITC में 7 members थे, सिर्फ 5 बचे, and out of these 5 members only 3 are aware of the fact कि company is running with below 7 members. However, 2 members जो है वो लोग ना US में रहते हैं और उनको ये बात का पता ही नहीं है कि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही. So every person who is member and who is aware of the fact, who is cognizant of the fact that the company is running with the members below the minimum requirement, he shall be held severally liable for the debts of the company which have been contracted after 6 months. See, 6 महीने का time span तो दिया हुआ है to rectify the error which has happened, but debts and liabilities के लिए liable कब होगा? After 6 months. And for which debts and liabilities? The debts and liabilities which have been incurred after 6 months, not during those 6 months, but after 6 months जो भी incur होता है उसके लिए the person would become liable. Is that clear? This is what section 3A talks of. Is that clear? Yes? एक बार section दिखाओ. Okay. You can read it here. Understood? Okay. So with this हमने क्या समझा? Step 2 हुआ है हमारा भी, wherein we have understood कि the person will have to determine which type of company he wants to start, and on the basis of the type of company the minimum number of members का जो criteria है, requirement है, वो fulfill करना होगा. Right? Let's now go to step 3. Step 3 क्या होगा? Now you tell me what should be step 3. Step 3 क्या होगा? And I don't want answers like पता नहीं. You think and answer. I don't want answers like pata nahi, I don't know. I don't want such type of answers.
अरे बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? MOA. ओके. Okay, so the next step would be drafting of the Memorandum of Association and Articles of Association of the company. So Memorandum और Article of Association जो है वो draft करना हो. Now, what is Memorandum of Association? ये तो आप लोगों को पता है what is Memorandum of Association. But अभी मेमोरेंडम का सबसे फर्स्ट क्लॉज क्या होता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम? सबसे फर्स्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेम क्लॉज. सो नेम क्लॉज में क्या होता है? नेम ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन द नेम क्लॉज. तो उसके लिए विल यू नॉट हैव टू डिटरमाइन और विल यू नॉट हैव टू डिसाइड ऑन द नेम ऑफ योर कंपनी? अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कंपनी का नाम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, हाँ या नहीं? नाम तो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? सो हमारा स्टेप 3 क्या होगा? Memorandum is not wrong. Your answer is not wrong. I'm not saying कि it is not drafting of MOA. It is drafting of MOA because MOA में अपने आप नेम और बाकी सारी चीजें कवर हो जाती है. So क्या होता है ना, कंपनी को से अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, so you will also have to reserve the name for your company. इन सर्टन सिचुएशंस क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आज आपने सोचा कि कंपनी मुझे स्टार्ट करना है, यू डिसाइडेड से ऑन अ नेम प्रैक्टो प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, प्रैक्टो प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम विच यू हैव डिसाइडेड अपॉन फॉर योर कंपनी. तो ये जो कंपनी का नाम है, इट शुड नॉट बी वेरी आइडेंटिकल विद एनी अदर नेम ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू द नेम ऑफ कंपनी विच हैव टू बी कंप्लाइड विद. अभी ऐसा हो सकता है कि ये सेम नाम ना कोई और ले ले. अगर आप इसको रिजर्व ना करके रखो तो ऐसा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समवन एल्स वुड टेक दिस नेम एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू नेम योर कंपनी प्रैक्टो प्राइवेट लिमिटेड. सो यू थिंक कि ठीक है, मैं पहले ना नाम रिजर्व करके रख लेता हूँ और फिर उसके बाद में आफ्टर अ फ्यू डेज आई विल start with the process of incorporation. So there's a possibility of reserving the name of the company or reservation of name of the company, and उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, वो है run, which means reserve unique name. So name reservation का जो फॉर्म है, that is run, that is reserve unique name of the company. So ये run form जो है वो फाइल किया जाता है, and that form is basically for reservation of name of the company. Now reservation of name can be done both at the time of incorporation of a new company और जब आपका एक ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और आपको उसका नाम चेंज करना होता है, तब भी नाम जो है वो कंपनी का रिजर्व कर सकते हैं. अभी एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के दिमाग में कि कंपनी का नाम कितने टाइम के लिए रिजर्व होता है. सो इफ यू रिजर्व्ड अ नेम फॉर द कंपनी, फॉर हाउ लॉन्ग विल द नेम बी रिजर्व्ड? द आंसर इज देयर आर टू आंसर्स टू दिस. ये दो आंसर कैसे, लेट मी एक्सप्लेन. So if you are incorporating a new company altogether, एक नया कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में the name would be reserved for 20 days. If the name has been reserved for incorporation of a new company, the name would be reserved for a time span of 20 days. मतलब 20 दिन के लिए नाम रिजर्व रहेगा. आपको 20 दिन के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो है वो फिनिश करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली यू विल हैव टू फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द अदर स्टफ विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी. और अगर द नेम हैज बीन रिजर्व फॉर चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी, मतलब योर कंपनी इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, but now you want to change the name of your company, and for that you have reserved a name for your company. So in such a situation, the name would be reserved for 60 days.
ठीक है, सो नाम रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू वुड थिंक कि अगर मैं अभी नहीं नाम रिजर्व करूं मेरी कंपनी के लिए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई और मेरी कंपनी का नाम ले ले। यू वुड नॉट वांट दैट, राइट? सो उस सिचुएशन में यू विल हैव टू रिजर्व द नेम, एंड नेम रिजर्वेशन के लिए द फॉर्म फाइल्ड इज रन रिजर्व यूनिक नेम। The time period for reservation would be 20 days in case of a new company and 60 days in case of in case it is for change in the name of company. तो उस time span के लिए ये reservation valid रहेगा, मतलब within that time span you have to fulfill the other procedures. Now talking of ये run form कहाँ पे मिलेगा, तो एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट का नाम है mca.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको रन फॉर्म मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू डू इट। So let's explore MCA's website and let's have a look at the run form as well. Let me share my screen. So ये जो है ये है mca.gov.in का होम पेज ऑफ MCA वेबसाइट। यहाँ पे you will go to this tab MCA services wherein you have company services का option, and यहाँ company services में there's this reserve unique name का option। तो एक्चुअली इधर लॉग इन करना होता है एंड फिर उसके आगे जाके सारे जो सर्विसेज है दैट वुड बी अवेलेबल। सो दैट्स वेयर यू फाइंड डिफरेंट things for reservation of the company. So here you also find Spice Plus. So Spice Plus is the form which is filed for the purpose of incorporation of company. और क्या हुआ है ना, जब से Spice Plus form introduce हुआ है, now you need not file a separate form for the purpose of reservation. पहले क्या था, पहले आपको रिजर्व करना पड़ता था नाम और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन वाला फॉर्म फिल करना पड़ता था। बट नाउ विथ स्पाइस प्लस इज बेसिकली अ फॉर्म विच इज ऑल्सो डन अवे विथ रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम। अभी विथ स्पाइस प्लस यू कैन रिजर्व योर नेम एज वेल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सो सारा चीज एक साथ हो जाएगा। सो दैट इज हाउ स्पाइस प्लस हैज मेड थिंग्स इजी। ओके, so let's look at the other requirements. So section 7, it provides for the procedure for incorporation of the company. And सबसे पहले क्या आता है, reservation of name. An application for reservation can be made through the web service available at mca.gov.in by using the form run. And ये सारा चीज ना विदाउट फीस कुछ नहीं होता, यू हैव टू पे सम फीस। जो भी फॉर्म आप फाइल कर रहे हो कंपनी से रिलेटेड, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स और वेदर इट इज एनी अदर फॉर्म, some minimum amount of fees has to be paid for all the forms which you are filing. So form run is filed for reservation. अभी आप एप्लीकेशन कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही होगा। It is not necessary that the application which you are making run form में for the purpose of reservation of name वो accept ही होगा। It may either be approved or reject depending on the situation. So it is the registrar who will either approve or reject your application. But आप वापस से apply कर सकते हो। You can resubmit your form, but that can be done after 15 days. Immediately नहीं। अगर रिजेक्ट हो गया एक बार तो 15 दिन के बाद आप वापस से रीसबमिट कर सकते हो आफ्टर रेक्टिफिकेशंस, आफ्टर मेकिंग द चेंजेस इन द फॉर्म। यू कैन नॉट डू इट इमीडिएटली। Okay, so in case your application has been rejected, your application has not been approved, in such a situation you are allowed to resubmit the form, but after 15 days, immediately nahi. Okay, so submission of application within 15 days for rectification of defect. So अभी उसके बाद आता है नेक्स्ट
document, next very important thing which you've already mentioned, that is MOA and AOA. That is the Memorandum of Association and Articles of Association. अभी आप लोग मुझे बताओ मेमोरेंडम क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है? I am sure you know about memorandum and articles because you've studied this in class 12th as well, and you've studied this at your foundation level in detail. So आपको ये तो पता ही है बेसिक्स की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. So I want you to answer this. What is memorandum and what is articles? We will study about memorandum and articles in detail. Do not worry. But abhi, I want you to answer this question. क्या होता है memorandum and what are articles of association? Charter of the company, rules and regulations. Okay. So एक ने डिसाइड किया क्या? अच्छा, you all decide and give the answer कि हाँ मैं मेमोरेंडम का बताऊंगा और मैं आर्टिकल्स का बताऊंगा. Anyways, so charter of the company. Charter of the company मतलब क्या? ऐसे charter word क्यों यूज किया? You all just answer to the first question, and if there's any follow-up question, you all do not even bother to answer it. अभी आप लोगों को कोई follow-up question आता है ना, तब मैं देखूंगी. Okay, so Memorandum of Association जैसा बोला जाता है that it is the most important document. It is the foundation on which the company is based. Reason क्या है उसका? क्योंकि कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव से बन रही है, द ऑब्जेक्टिव विथ व्हिच द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑल द अदर स्टफ रिलेटेड टू द कंपनी, all of it is stated in the memorandum of association, whether it is the name of the company or whether it is the registered office of the company, object of the company, liability of the company, type of company, everything is stated in the memorandum of association. So memorandum जो है ना एकदम सुप्रीम डॉक्यूमेंट है. कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी का मेमोरेंडम जाके पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी. Whereas जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस. So when we talk of memorandum of association is establishing the relationship of company with the outsiders, whereas when we talk of articles of association, they are establishing the relationship of company with its members. Internal management ke rules and regulations, the bylaws of the company are stated in the articles of association, whereas memorandum of association में basic structure of the company लिखा होता है. So this becomes our next step, wherein the drafting of MOA and AOA is done. Drafting मतलब formation, उनको लिखा जाएगा, MOA AOA का drafting होगा, and not only drafting of MOA AOA, they shall also be signed by all the subscribers to the memorandum. Subscribers to the memorandum basically are the people who are the part of formation of the company, जो भी subscribe कर रहे हैं to the memorandum of association. So drafting and signing of MOA and AOA is the next step.
So there are certain formats which have been given for MOA and AOA. Schedule 1 में कुछ formats दिए हुए हैं. So वो वाले formats use करके भी MOA AOA draft कर सकते हैं. Yeah, and it is not necessary that it has to be in that format. There can be certain changes in the format as well. So there are some formats which can be used for drafting MOA and AOA, and these documents shall be e-filed and e-stamped. So e-filing ही होता है, it is all electronically done nowadays. All the documents with respect to the company, everything is filed electronically. So these documents shall be filed, shall be drafted and shall be signed by all the people when it is being submitted to the registrar. उसके अलावा जो भी लोग आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स बन रहे हैं, द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, यू विल हैव टू ऑब्टेन देयर कंसेंट. ऐसे नहीं कि हाँ किसी को भी अपने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया. जैसे आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप मेरे पास आते हो कि हाँ मैम के पास जाते हैं, मैम को डायरेक्टर बनाते हैं कंपनी में. यू विल हैव टू ऑब्टेन माय कंसेंट. आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि हाँ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इज अश्लेषा. No, you cannot do that. You will have to obtain my consent before naming me as a director of your company. So जो भी लोगों का नाम आप state कर रहे हो as directors, you will have to obtain the consent of these persons whom you are nominating as directors of the company. Apart from it, there are certain declarations which have to be filed. Now let's have a look at let's now have a look at the documents and the information which are to be filed with the registrar of company. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है उसके बारे में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एंड सिर्फ मेमोरेंडम ड्राफ्ट नहीं, इसका साइंड कॉपी, साइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड साइंड articles of association. So for registration of company, the following documents and information are to be filed with whom? With the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. Matlab, with whom are you going to file all these documents? These documents are to be filed with the registrar. Now, which registrar? The registrar who has jurisdiction, who has supervision or control over the area where the registered office of the company will be situated. तो जिस एरिया में आप रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट कर रजिस्टर्ड ऑफिस आप कंपनी का खोलने वाले हो, उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल करोगे. अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स है? लेट्स हैव अ लुक एट देम. द फर्स्ट वन इज MOA and AOA signed by all the subscribers to the memorandum. So signed MOA, signed memorandum and signed articles of association shall be filed. Apart from it, there is a declaration. दो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होते हैं. एक डिक्लेरेशन होता है बाय प्रोफेशनल्स, दूसरा डिक्लेरेशन होता है बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट डिक्लेरेशन. So declaration that all the requirements of this act and rules in respect of registration and related matters have been complied with. So क्या declaration है? First declaration. The first declaration is stating that all the requirements, ये एक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 का जो भी रिक्वायरमेंट है एंड रूल्स का जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, वी हैव कंप्लाइड विद ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. एंड हु इज गिविंग दिस डिक्लेरेशन? दिस डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन बाय द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. क्या लगता है आप अकेले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर पाओगे? Will you not need any person's supervision? अभी जो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर किशन था ना, मिस्टर किशन, आपको क्या लगता है मिस्टर किशन अकेले ही कंपनी का पूरा इनकॉर्पोरेशन कर लेंगे? उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी. किशन को आइडिया ही नहीं है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, तो फॉर विच किशन विल हैव टू अप्रोच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एन एडवोकेट
जो उसकी हेल्प करे फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी. So professional help is definitely required whenever a company is being incorporated. देखने में सब कुछ बहुत easy लगता है, but जब आप करने जाते हो तब you do face challenges, right? अभी देखने में ऐसा लगता है कि वाह कितना easy subject है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप आंसर लिखने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका level of understanding क्या है about the subject, right? This is what happens with us, right? When we read something for the first time, when we understand something for the very first time, हमको ऐसा लगता है वाह ये तो बहुत easy है और बहुत easily हो जाएगा. I'm sure foundation पे भी आपको ऐसा ही लगा होगा कि law में Indian Contract Act ये सबसे easy act है. But वही Indian Contract Act का एक case study based question आ जाए ना, तो हमारी हवा निकल जाती है. वहीं पे we are blank. ये क्या आ गया? हम तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ के आए पर हम आंसर नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करके जाते. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी सब्जेक्ट, स्पेशली लॉ. ठीक है. So this declaration has to be given by whom? By the professional who is engaged in the formation of company, and person named in the articles as director, manager or secretary of the company. So दो लोग ये declaration देंगे. One is the person who is engaged in the formation of the company, and the other is the person who is being named in the articles of association of the company as the director, manager or secretary of the company. So ये हो गया first declaration by the legal professionals. अभी जो सेकेंड डिक्लेरेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें तीन चीजें स्टेट करनी होती है. कौन सी तीन चीजें? लेट्स लुक एट देम. नाउ दिस डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन by each of the subscribers and from the persons who are named as first directors in the articles. So कौन दे रहा है ये सेकेंड वाला डिक्लेरेशन? ये सेकेंड वाला डिक्लेरेशन दे रहा है persons who are named as subscribers, मतलब whoever is the subscriber to the memorandum, and the persons who are named as first directors. If there's any person who has been named as the first director of the company, then that person also has to give this declaration. Now, what are the things which are to be stated in this declaration? Let's understand. The first thing is that he is not convicted of any offense in connection with promotion, formation or management of company. So, सबसे पहली चीज क्या state करनी होगी in the declaration? The first thing is that this person has not been convicted of any offense, मतलब has not been found guilty of any offense in relation to or in a matter which is connected to promotion, formation or management of the company. So क्या चीज? He is not convicted of an offense in connection with promotion, formation or management of the company. Second चीज क्या state करनी पड़ेगी? और he is not been found guilty of any fraud, मतलब किसी fraud का guilty नहीं find किया गया इसको, or misfeasance or of any breach of duty to any company during last 5 years. This is one very important condition. It says that this person should not have been found guilty of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company during the last 5 years. मतलब पिछले 5 सालों में इस इंसान ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, या फिर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी नहीं की होनी चाहिए, या फिर कोई मिसफीसांस नहीं किया होना चाहिए इन द लास्ट 5 years. नाउ से आपको आज कंपनी खोलना है इन द ईयर 2022. The last 5 years में this person shouldn't have been found guilty of any fraud or misfeasance or breach of any duty. अगर से in the year 2019 this person was found guilty of fraud, तो क्या क्या ये ऐसा डिक्लेरेशन में स्टेट कर सकता है? नहीं कर सकता. सो डिक्लेरेशन में क्या स्टेट करना पड़ेगा? पिछले 5 सालों में ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफीसांस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी.
And the last thing which they'll have to state is that all the documents which are filed with the registrar for registration of company contain information that is correct, complete and true to the best of his knowledge and belief. अभी ये जो term है ना, best of his knowledge, this is basically something which protects this person. I'll tell you how this protects. अभी क्या होता है, अगर कोई आपसे किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, someone asks you about something and you're not sure about it, you're not sure but you're still answering it. तो हम कहाँ तक, how do we answer it? So जहां तक मुझे पता है या फिर जितना मुझे पता है उसके हिसाब से, या to the best of my knowledge I know this. This is to the best of my knowledge. This phrase, to the best of my knowledge, is basically only protecting you. कि हाँ, जहां तक मुझे पता है मैंने जो भी बोला है वो सच है, जहां तक मुझे पता है मैं जो भी बता रहा हूँ वो सच है या सही है. So ये phrase जो है ना वो बेसिकली एक इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि फिर बाद में आके अगर वही इंसान आपसे कुछ पूछे कि यार तूने तो ऐसा बोला था बट एक्चुअली में तो कुछ और ही हुआ, तो आप क्या कहोगे? आप तो ये बोलोगे, हाँ but I mentioned, right, to the best of my knowledge I know this, but there could be something else as well, right? So this person, the subscribers and the first directors, they are stating three things. सबसे पहले तो कि भाई मैं कोई offense के लिए convicted नहीं हूँ with respect to formation, promotion or incorporation of company, registration of company. I have not been convicted of any such offense. Second, I have not been found guilty of any fraud during last 5 years. और फिर लास्ट में ये क्या कहेंगे डिक्लेरेशन में, लास्ट थिंग व्हिच दे स्टेट इज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, दे आर ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. All the documents which we have filed for the purpose of incorporation of company, they are true and correct to and complete to the best of my knowledge. So these are the things which will be stated in the second declaration, and this declaration is given by the subscribers to the memorandum and the first directors, if any. इतना क्लियर है? ये समझ में अभी तो 3 डॉक्यूमेंट्स देखे. First one was Memorandum of Association. Second one was first declaration by the legal professionals. Third one was the declaration given by subscribers and the first directors. Is this clear? Is this much clear? Is there any question you have? All clear. All clear मतलब क्या? समझ में आया या दिमाग में से सब कुछ ही क्लियर हो गया? समझ गया. Okay. So moving on to the next thing, with next document, next information which is required to be filed with the registrar for the purpose of incorporation. So और क्या डिटेल्स लगेंगे? सबसे पहले तो एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, मतलब जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता कंपनी का तब तक रजिस्ट्रार कौन से एड्रेस पे आपके साथ कम्युनिकेट करे. सो यू विल हैव टू गिव दैट डिटेल्स ऑफ दैट एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस. देन particulars such as name, address, nationality of every subscriber to memorandum along with ID proof. So details of all the subscribers to the memorandum has to be submitted along with their ID proof. और इनका ही नहीं, जो भी डायरेक्टर्स नेम कर रहे हैं, every person who has been named as the first director, his name, his DIN is director's identification number, his DIN, his residential address, his nationality, everything shall be stated. All the particulars required, all the information required with respect to that director, every such information has to be stated. Then apart from it, एक बहुत important information जो state की जाती है incorporation documents में, वो ये है
The particulars of interests of the persons mentioned in articles of association as first directors in other firms or body corporates, along with their consent to act as directors in such form and manner as prescribed. मतलब क्या? ये say for example, there's a person, Mr. Adi. मिस्टर आदि को आप अपनी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बना रहे हो. फर्स्ट डायरेक्टर इज बेसिकली जो पहला डायरेक्टर बन रहा है आपकी कंपनी में. ठीक है. आदि इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन योर कंपनी. आदि ने अपना कंसेंट दे दिया. कंसेंट, वी हैव अंडरस्टूड कंसेंट इज रिक्वायर्ड. आदि हैज गिवन हिज कंसेंट, बट आदि ना एक दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है. तो ये जो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है ना, इसका इंफॉर्मेशन भी स्टेट करना पड़ेगा. द इंटरेस्ट विच द डायरेक्टर वुड हैव इन एनी अदर कंपनी और एनी अदर पार्टनरशिप फर्म, all those details shall be stated. Interest could be in any form. He could be a partner in that partnership firm, could be a shareholder in that company. So कुछ भी हो सकता है, तो वो सारा डिटेल जो है वो देना पड़ेगा. Now why is this relevant? This becomes relevant when we talk of related party transactions. वहां पे ये बहुत relevant हो जाता है. ठीक है. क्लियर है? इतना समझ में आया? Okay. So these are the details which shall be stated when filing for incorporation of the company. So ये सब कुछ section 7 में दिया हुआ है. And apart from this, ये जो भी documents है ना, these have to be maintained permanently. ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर रहे हो, डिक्लेरेशन हो गया, एमओए, एओए, ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू आर फाइलिंग फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, दे शैल बी स्टोर्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. सो जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होने चाहिए. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रिजर्व्ड टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. दैट इज जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, जब तक कंपनी में जान है, तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे. So these documents shall be preserved till the time the company is dissolved. So preserved permanently. Where? At the registered office of the company. Okay. So all these documents, all the information which is filed for the purpose of incorporation of the company, all of this shall be preserved permanently at the registered office of the company. Okay, clear? Is this much clear? Now what will be the next step? अभी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो फाइल कर दिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सो अभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? आरओसी के पास. अभी आरओसी क्या करेगा? आरओसी विल एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स. The registrar will examine and scrutinize all the documents which have been filed with him for the purpose of incorporation of company. And after that, on being satisfied, say after examination and after scrutiny of the documents, if the registrar is satisfied, he will issue a certificate of incorporation. ठीक है. After examining and after scrutinizing the documents, on being satisfied कि हाँ जो भी information है वो सही है, जो भी information दिया हुआ है it is fair enough, the registrar of company, he will register the company and he will issue a certificate of incorporation. Certificate of incorporation simple terms बोलूँ तो company का birth certificate है. जैसे किसी इंसान का बर्थ होता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वैसे ही कंपनी का जन्म हो रहा है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है. नाउ दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट कंटेन्स सेवरल डिटेल्स सच एज नेम ऑफ द कंपनी होगा इस पे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग बट द बर्थ डेट ऑफ द कंपनी. अपार्ट फ्रॉम इट, एक कंपनी को ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा, दैट विच इज कॉल्ड एज
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे आप लोगों के पास अपना एक आधार नंबर होता है, वैसे कंपनी के पास भी अपना एक यूनिक आईडी नंबर होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज सिन और द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सिन के बारे में, इफ आई गिव यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, इफ द कंपनी इज लिस्टेड तो उसका सिन स्टार्ट होगा एल से। इफ द कंपनी इज अनलिस्टेड उसका सिन स्टार्ट होगा यू से, which determines whether a company is listed or unlisted. So next time you see a company जिसका सिन एल से स्टार्ट होता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये लिस्टेड कंपनी, विदाउट इवन नोइंग कि वो लिस्टेड है या नहीं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर अ कंपनी इज लिस्टेड और नॉट? उसका सिन देख के आपको पता चल जाएगा कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है। So upon being satisfied with all the information which is being filed with him, the registrar, he will issue a certificate of incorporation which will contain the name of the company, its address, उसका address भी होगा कहाँ पे situated है वो भी लिखा होगा, the date of incorporation of the company, and the corporate identification number, that is the SIN of the company, will also be stated in the certificate of incorporation. So is this much clear? ये समझ में आया? और जब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करे ना, तभी सम फीस हैज टू बी पेड. नथिंग हैपेंस फॉर फ्री. Did you understand this? Okay. ठीक है. So this was in all the entire incorporation process of the company. अभी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इट एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, and the liability of members of the company would be limited. So जो मैं आपको बता रही थी, SPICE plus is the form. The full form of SPICE is simplified pro forma for incorporating company electronically. So SPICE is the form which is filed for the purposes of incorporation of the company. So company incorporation का form SPICE दिया हुआ है, but now it is SPICE plus. पहले SPICE था, अभी SPICE plus है. Is that clear? Have you understood इधर तक incorporation के process and the documents, the different things which are to be filed for the purpose of incorporation of the company? Any questions or any doubts till now? I'll give you a break, Baba. I know break ही चलता रहता है आपके दिमाग में. I'll give you a break. 2 minutes का break I'll give. But before that, before we take a break, is there any doubt you have? Is there any question you have? ब्रेक मिलने की खुशी में कोई क्वेश्चन ही नहीं होता आप लोगों के पास. ठीक है. So we'll take a small break of 2 minutes and then we'll start again. Are you both there? Let's start. Okay. पहली बार इतना instantly I got your response. That's nice. So we've now understood कि what is the process of incorporation of the company. Company का incorporation कैसे होता है? What are the different documents which are filed for the purpose of incorporation of company? The different declarations which are to be filed and who gives all these declarations? ये भी हमने देखा है, right? So अभी हम बात करते हैं what if some false or incorrect information is given for the purpose of incorporation of company.
उस सिचुएशन में क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. Yeah. So there could be two situations. अभी जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं वहां पे दो situations आ सकते हैं wherein some false or incorrect information is given for the purpose of incorporation. तो जहाँ पे कोई फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अभी ऐसा हो सकता है दैट कुड बी अ सिचुएशन वेयर द कंपनी इज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड on the basis of this false or incorrect information, or it could be a situation wherein the company is yet to be incorporated. It was in the process of incorporation and during the incorporation process ही रजिस्ट्रार को ये पता चल गया कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? So where some false or incorrect information was intentionally furnished for the purpose of incorporation of the company, and the registrar comes to know of it even before the company has been incorporated, उस situation में every person who was aware of this fact, every person who was aware of this fact कि गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447. अरे 447 कहीं और भी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है 447 देख के? एनीथिंग कम, डज समथिंग कम टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट 447? मैंने बोला था कंपनीज एक्ट में 447 कब आएगा? जहां पे भी फ्रॉड होगा. तो अगर आप फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आप फ्रॉड ही कर रहे हो, राइट? सो if a company is not being incorporated, so every person who was aware of this fact and who was a part of this for furnishing of false or incorrect information, that person shall be punishable for fraud under section 447. What if the company has already been incorporated? यहाँ पे भी 447 का punishment तो लगेगा. Every person who is part of this offense, they will be punished under section 447, no doubt about it. But company तो incorporate हो गई, company का क्या होगा? The people who are at fault will be punished. People who are at fault will be punished under section 447. But what about the company? Company has already been incorporated. What will happen to the company? So इस सिचुएशन में जो केस है वो जाएगा ट्रिब्यूनल के पास. अभी ट्रिब्यूनल क्या होता है? जैसे कोर्ट्स होते हैं वैसे ही ट्रिब्यूनल होता है. इट इज ऑल्सो अ जुडिशियल बॉडी. Just a minute. So tribunal is also a judicial body. तो उस सिचुएशन में जहां पे कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई है, जहां पे कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई है वो जाएगा ट्रिब्यूनल के पास. नाउ ट्रिब्यूनल इट विल डिसाइड ऑफ व्हाट शैल बी डन विद द कंपनी. कंपनी के साथ क्या करना है? कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, सो ट्रिब्यूनल विल नाउ पास ऑर्डर्स. What type of orders will the tribunal pass? Now, when talking about the type of orders which the tribunal would pass, tribunal order कर सकता है let's wind up the company, या फिर tribunal order कर सकता है let's bring some changes in the memorandum of association and articles of association of the company, or the tribunal would make the liability of members of the company unlimited क्योंकि उन्होंने झूठ बोल के कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई है. So let's make their liability unlimited. Or the tribunal may pass orders as it thinks fit. So जो भी ट्रिब्यूनल को सही लगता है ट्रिब्यूनल वैसे ऑर्डर्स पास करेगा in such a situation. Now
Whenever tribunal is passing such orders, उसके पहले the tribunal will give an opportunity of being heard. So opportunity of being heard तो एक बार देना ही पड़ेगा. अगर किसी को accuse किया जा रहा है of something, that person has to be given an opportunity of being heard. So the company also shall be given a reasonable opportunity of being heard before any decision is made by the tribunal, and on the basis of the company's representations and all the other things, the tribunal will pass its order. So this is what will happen when the company has already been incorporated. So let's have a look at the section. So if any person, he furnishes false or incorrect information or suppresses any material information, that is does not give any material information and information which is crucial for the purpose of incorporation, of which he is aware in any of the documents which is filed with the registrar for in relation to registration of company, he shall be liable for the action of for fraud against अंडर सेक्शन 447. सो जो भी इंसान ऐसे गलत काम कर रहा है उसको पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो मिलेगा. But if the company has already been incorporated by furnishing false or incorrect information or suppressing any material information, तब क्या होगा? उस सिचुएशन में promoters, persons who are first directors and persons who are making declaration, they shall be held liable for fraud under section 447. So कौन liable होगा? Promoters of the company, first directors, and the people who have made declaration. They shall be held liable for fraud under 447. So this is with respect to the individual's punishment. मतलब जिन लोगों ने fraud किया उन लोगों का punishment हो गया. But company के साथ क्या होगा? कंपनी के साथ क्या होगा वो डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल विल डिसाइड. सो द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट on being satisfied the situation so warrant, मतलब depending on the situation, the tribunal will pass such orders as it thinks fit for regulation of management of company. They may change MOA or AOA or direct that liability of members shall be unlimited or remove the name of the company from the register of companies, pass an order for winding up of the company, or pass any such orders as the tribunal would think fit. So जो भी orders tribunal को सही लगता है tribunal वैसे orders pass करेगा. But before passing any such orders, the company shall be given a reasonable opportunity of being heard and consider such transactions which are entered into by the company, including obligations of any contracted or payment of any liability. So अगर company ने already कोई transactions कर लिए है तो before passing any orders the tribunal has to consider all of those things. मतलब पहले तो company का representation, उसके अलावा any transactions which have been entered by the company or any other obligations which have been contracted by the company shall be taken into account by the tribunal before the tribunal is passing its orders. So this is what will happen when a company has been incorporated by giving some false or incorrect information. Clear है ये समझ में आया? Okay. Let's now talk of section 9, what it talks about the effect of registration. So section 9 it talks about the effect of registration. मतलब एक बार अगर company register हो चुकी है तो what will be the effect of registration of the company? So from the date of incorporation, the subscribers to the memorandum and all other persons who may from time to time become members of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum, shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act,
and having perpetual succession with power to acquire, hold, dispose of property, to contract, to sue and to be sued in its own name. So जैसे ही जो भी date of incorporation होता है उस date से company के पास सारे powers आ जाते हैं as a body corporate. It has perpetual succession. It has the power to hold, acquire, or dispose of any property. It gets a right to enter into contract. It can be sued and can also sue someone else in their own name. So these are the basic effects of registration of the company. So as soon as the company is registered, ये सारी चीजें, ये सारे powers company के पास आ जाते हैं. Any question till now? कोई doubt है? Is everything clear? Can we move ahead? We are going to start with MOA now, Memorandum of Association. Okay, I'll have to deem your silence as acceptance. Got no other choice. इतना बोलने के बाद भी आप लोग अपना मुंह नहीं खोलते हो, राइट? Let's start with the other concept, and that is Memorandum of Association. Which is MOA. So Memorandum of Association, जैसे आप लोगों ने बताया, that it is the charter of the company, it is the document foundation of the company, the most important document. अभी जो मेमोरेंडम होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें स्टेट की हुई थी. The Memorandum of Association of the company is divided into 6 clauses. It is divided into 6 clauses, which we'll look at in some time. We'll understand every clause of memorandum. But the essential facts about Memorandum of Association is that it is a public document. Public document means what? अगर आपको अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम देखना है, या फिर इन्फोसिस का मेमोरेंडम देखना है, टीसीएस का मेमोरेंडम देखना है, क्या आप देख सकते हो? हाँ, आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो. और उसके लिए यू विल ओनली हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ फीस एंड यू विल बी गिवन एक्सेस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी. इलेक्ट्रॉनिकली होता है, एवरीथिंग हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली. So Memorandum of Association is a public document, which means any person who is entering into any contract with the company, any person who is investing into the company, they have access to the Memorandum of Association. They can have access to the Memorandum of Association, and when they are making any decision with respect to the company, with respect to their investment, they can have a look at the memorandum, and on the basis of memorandum decide whether they want to make an investment in this company or not. तो क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कभी भी एक्सेस कर सकता है. और क्योंकि कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के बेसिक राइट्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में किसी को भी पता चल सकता है, राइट? यस और नो? यस और नो? Will you not be able to know about the basic objectives of the company or the basic rights of the company because you have access to the memorandum? You will, right? So Memorandum of Association बेसिक डॉक्यूमेंट होता है. ये जो बेस बोलते हैं ना, बेस फॉर्म करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Now talking of what are the different things which are stated in a memorandum. But before we go to that, let's have a look at the definition of memorandum. Memorandum का definition देखते हैं और फिर हम आगे memorandum के clauses के बारे में समझते हैं. So section 2 clause
56 defines memorandum, says, which means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. मतलब क्या? Memorandum of association मतलब the MOA of the company as it was originally made या फिर the altered MOA. Can the contents of the MOA be altered? The answer is yes. आप मेमोरेंडम के कंटेंट्स को ऑल्टर कर सकते हो. Alteration of MOA is possible, which we'll understand in some time, which we'll understand not today, but after we complete MOA and AOA, we'll talk of alteration of MOA and AOA. So MOA जो होता है वो either originally framed MOA होगा या फिर the MOA which has been altered from time to time. As per the provisions of the Companies Act, you cannot alter the MOA going beyond the provisions of the act. You have to abide by the law and उसके दायरे में रहते हुए ही आप कोई भी चीज कर सकते हो. So that is the meaning of MOA which has been given to us. That is the definition of MOA which has been given to us in section 2. अभी एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि क्या ये डेफिनेशन याद रखना है. My answer would remain the same. You do not have to memorize it. सिर्फ बेसिक चीज जो है, बेसिक मीनिंग जो है वही आपको याद रखना है. So memorandum is the base document जैसा मैंने बताया for the formation of company, and along with AOA is regarded as constitution of the company. So memorandum is the basic document, the basic document for the formation of company, and along with articles it is referred to as the constitution of the company. जैसे भारत का संविधान है वैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल बनके कंपनी का संविधान बनते हैं. So जैसे we have Constitution of India, similarly for the Constitution of Company we refer MOA and AOA. And जैसे मैंने बताया था that there are some specified formats rather for a purpose of drafting MOA. So अलग-अलग tables दिए हुए for different types of companies. So limited by shares, limited by guarantee, having share capital, not having share capital, unlimited company. So सबके लिए there are different formats which have been prescribed for the purposes of drafting the Memorandum of Association. Now, what are the objects of registering MOA? It identifies the scope of operations. जैसे हमने समझा है कि MOA में जो लिखा है कंपनी वही चीज करेगी. So it helps people identify what is the scope of operations of the company, and company cannot go beyond the scope which has been stated in the memorandum. Whatever has been stated in the memorandum, the company has to perform all its activities, company has to perform all its functions and operations within whatever has been stated in the memorandum and cannot go beyond it. Apart from it, it enables stakeholders to know what its powers are and what activities it can engage in. क्या चीजें कर सकते हैं, उनके powers क्या है, उनके activities क्या है. Every person जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, it is presumed that this person has gone through the memorandum of the company and knows about the things which have been contained in the memorandum. And shareholders, they understand the purpose for which their money will be used by the company and the risk which he is taking by making investment in the company. जैसे मैंने बोला कि मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसका मेमोरेंडम नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट want to ascertain what type of company is it, मेरा पैसा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा? You will, and you will also want to identify the level of risk involved when you are investing in a certain company. So that's where memorandum plays a very important role. It helps you in ascertaining what is the level of risk involved and how your money is going to be utilized when you invest in that company. So वहाँ पे memorandum of association जो है बहुत ही crucial role play करता है. Clear है? ये समझ में आया? Is this much clear? Yes? Okay. So let's now start with the clauses of memorandum. सबसे first clause जो होता है memorandum का वो है name clause. You tell me name clause में क्या क्या लिखा होगा? बहुत simple है ना, name clause is very simple.
So you tell me name clause में क्या क्या लिखा होगा? वेरी गुड. हाँ, नेम क्लॉज में नेम ही लिखा होगा, और तो क्या ही लिखा होगा, है ना? So let's write down name. ठीक है, name is correct. I wouldn't say name is not correct. Name is correct. But again, जब हम name clause की बात करते हैं, when we are talking of the name clause of the memorandum, states the name of the company. Now, if it is a private company, the suffix private limited has to be attached to its name. If it is a public company, the suffix limited has to be attached to the name of a public company. और अगर वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी का नेम कैसा होता है? वन पर्सन कंपनी का भी सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड होता है, बट इसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा जाता है वन पर्सन कंपनी, सो दैट पीपल नो दैट दिस कंपनी इज अ वन पर्सन कंपनी. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का जो नाम है, इट कैन नॉट कंटेन सम अनडिजायरेबल टर्म्स. अनडिजायरेबल टर्म्स मतलब क्या? वर्ड्स लाइक नेशनल, बैंक, रॉयल, charter. So there are certain terms which cannot be used in the name of company, because say अगर किसी कंपनी के नाम में ये टर्म नेशनल आ रहा है, तो वो क्या इन्फ्लुएंस देगा? अगर आप किसी कंपनी का नाम पढ़ रहे हो और उस कंपनी के नाम में नेशनल है, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी होगा, या दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट. ये बैंक आता है किसी के नाम में, तो ऐसा लगता है दिस इज अ बैंकिंग कंपनी, राइट? सो the name of company, सबसे पहले तो it should not resemble name of any other company which is already in existence. मतलब it should not be same, it should not be similar. Second thing क्या होता है? The name of the company should not contain any undesirable terms or terms which give a different meaning. अभी अगर किसी कंपनी को वर्ड नेशनल यूज करना ही है अपने नाम में, they will have to obtain prior approval of the central government, and only then they can use that term national in their name. So unless and until they've obtained approval, they cannot use these kind of terms in their name. और similarly, अगर किसी कंपनी को बैंक यूज करना है ना अपने नाम में, तो उनको रिजर्व बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा, and they'll have to follow the terms and conditions specified by the Reserve Bank. Similarly, if a company wants to use the word insurance in its name, they'll have to obtain approval from IRDA. IRDA क्या है? Insurance Regulatory Development Authority. They'll have to obtain approval, have to follow the terms and conditions which have been specified by IRDA if they want to use these kind of terms in their names. So when we are talking of name of the company, should end with the word private limited if it is a private company, with the word limited if it is a public company. And the name of company should not be very similar or should not resemble the name of any other company which is already in existence. The name of the company should not contain any undesirable terms, and also should not give an inference that this company is controlled or owned by government या फिर any other such authority. अगर यूज भी करना है वैसे टर्म्स, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही वो लोग यूज कर सकते हैं. So talking of the name clause, so the name clause, it shall state the name of the company. Limited, लास्ट वर्ड लिमिटेड होगा पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड होगा प्राइवेट कंपनी के केस में. नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी ऑफेंसिव, मतलब शुड नॉट कंटेन एनी ऑफेंसिव टर्म्स, शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू नेम ऑफ any other company which is in existence, similar to name of any other company which is in existence, undesirable with respect to the objectives of the company, indicate association with government of India, जैसे मैंने बोला था नेशनल वर्ड यूज किया तो इट गिव्स एन इंडिकेशन कि ये तो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होगा. सो उसके लिए गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है.
सो नेशनल के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल, बैंक के लिए cannot containing word bank only if it is engaged in banking business. So rule 8 क्या बोलता है? Names which resemble too nearly with existing name. Rule 8 बोलता है undesirable name नहीं होना चाहिए. 8 भी बोलता है words or expression which can be used only after obtaining previous approval of central government. So there are certain words which can be used by the company in its name, but only and only after obtaining prior approval of the central government. गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के पहले कुछ टर्म्स यूज नहीं कर सकती कंपनी. नाउ व्हाट आर द टर्म्स? लेट मी शो यू. So these are certain terms which can be used in the name of the company after obtaining prior approval of the central government. तो कौन से टर्म्स है ये सारे? बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पंचायत, म्यूनिसिपल. तो ये सारे जो भी टर्म्स है ना, ये सारे तभी यूज किए जा सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये सारे लिस्ट ऑफ टर्म्स है विच कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी इन इट्स नेम, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बिफोर दैट. क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके. So next point, it talks about the reservation of name of the company. ये हमने already कर लिया है, but let's understand it. So application for reservation कब किया जा सकता है? Either for formation of a new company, name of a proposed company, और name जब company को अपना नाम change करना होता है. It shall be made to the registrar in prescribed form and along with some prescribed fees. कितने दिनों के लिए रजिस्ट्रार रिजर्व करेगा नेम? फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days from the date of approval or any other period which is prescribed. And in case it is for reservation for change in the name of existing company, तो उस सिचुएशन में 60 days के लिए रजिस्ट्रार विल रिजर्व द नेम आफ्टर अप्रूवल. 60 days के लिए रिजर्व होगा. सो न्यू कंपनी फॉर्म करना है, उस सिचुएशन में द नेम विल बी रिजर्व फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ 20 days. And in case of formation of in case of change in the name of an existing company, the reservation of name would be valid for 60 days. Cancel किया जा सकता है क्या reservation? So where after reservation of name it is found that name was applied by furnishing wrong or incorrect information, so reserve हो गया name, but उसके बाद में ये पता चला कि जो नाम के लिए application किया था that was by furnishing wrong or incorrect information. तो उस सिचुएशन में if the company has not been incorporated, reservation cancel हो जाएगा, और जो पर्सन ने एप्लीकेशन किया उसको पेनाल्टी हो सकती है अप टू 1 लाख रुपीस. If the company has been incorporated, then the company will be directed to change its name within 3 months after passing an ordinary resolution, or take an action of striking of the name from the register, या फिर winding up of the company. So क्या हो रहा है? Reservation of name with false particulars. The name of the company has been reserved, but this reservation has happened because of some furnishing of wrong information. Okay, furnishing of some false or incorrect information, the name of this company has been reserved. अभी इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? या तो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है.
If the company has not been incorporated, then in that situation, the reserve name will be cancelled. Reservation जो किया था वो cancel हो जाएगा because गलत information दिया. And every person who has made this default, जिस भी इंसान ने ये गलत information file किया उसको penalty होगा up to ₹1 lakh. Up to 1 lakh. Okay, the penalty may go up to 1 lakh. If the company has already been incorporated, उस situation में the company would be directed to change its name. उसके लिए 3 months का time दिया जाएगा company को. By passing an ordinary resolution, the company will have to change its name. या फिर the name of the company will be striked off from the register of companies. या फिर a petition for winding up of the company will be filed. So this can be done when the company has already been incorporated with a name which was reserved by furnishing some incorrect or false information. समझ में आया ये? Clear है? Yes, no? Please tell me if you've understood things or not. Yes? The next clause of the Memorandum of Association is the Registered Office Clause. अभी जो Registered Office Clause है ना, इसके दो तीन नाम हैं. It is called as the Registered Office Clause or the Situation Clause. Or it is also called as domicile clause. इन सबका मतलब एक ही है. They are all talking about the registered office of the company only, but these are different names which have been given to the registered office clause of the Memorandum of Association. अभी क्या लगता है registered office clause में क्या state किया जाएगा? क्या stated होगा? What would be stated in the registered office clause of the Memorandum of Association? बताओ. ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा है. RS is address of registered office. Okay. So basically क्या होता है ना, registered office clause में क्या stated होता है? The name of the state where the registered office of the company would be situated. So state का नाम लिखा होता है of where the registered office of the company would be situated. ठीक है? So the registered office clause, it states the name of the state in which the registered office of the company is situated. तो state का नाम दिया जाता है. Yeah, but obvious along with the details of the location and all the other details about the address of the registered office of the company. So that is the registered office clause. अभी registered office clause के बाद आता है the most important clause of the memorandum, which is the object clause. ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर बेस्ड एक पूरा डॉक्ट्राइन है जो आप लोगों ने पढ़ा है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. व्हेन यू आल्सो स्टडीड दिस केस लॉ ऑफ एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिच. कुछ याद आ रहा है? फाउंडेशन में ये पढ़ के आए हो? एशबरी का केस था. आई विल आस्क यू द केस लॉ. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द केस लॉ. ये केस लॉ आप लोगों ने पढ़ा है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या स्टेट होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर तो एक पूरा डॉक्ट्राइन बना दिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. And the most important clause of the memorandum is the object clause. You tell me what is stated in the object clause. Jaldi, we don't have a lot of time.
ऑब्जेक्ट क्लॉज स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. वेरी गुड. नेम क्लॉज का पूछा तब भी ऐसे ही बताया था आपने, दैट स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी. अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में पूछ रही हूँ तो भी आप लोग बोल रहे हैं इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. वेरी सिंपल वे ऑफ आंसरिंग थिंग्स, राइट? ज्यादा दिमाग को हम स्ट्रेस नहीं करेंगे. ये आंसर जो भी बेसिक है. हाँ, राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट इफ यू कुड एक्सप्लेन इट अ बिट. ये क्या पूछ लिया? Okay, so the object clause, it specifies the object with which the company has started, the scope of powers of the company. क्या क्या काम करेगी कंपनी. सो जैसे किशन का ऑब्जेक्ट था गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वो कहाँ पे लिखेगा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग? यहाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेगा दैट उसकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है द business, the purpose with which the company has been incorporated is गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. सो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स विद व्हिच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट इज द पर्पस विद व्हिच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. सो ये सारी चीजें जो होती है ये सारा ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम में स्टेट किया जाता है. एंड द कंपनी कैन नॉट act beyond what has been stated in the object clause. So it contains the object for which the company is proposed to be incorporated and matter necessary in furtherance thereof. तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में से अगर लिखा हुआ है दैट कंपनी विल डू अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बट दिस कंपनी इज सेलिंग मोबाइल फोन्स. गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन्स में is there any correlation, is there any connection between these two businesses? Where is garment manufacturing and where is selling mobile phones connected? There's nowhere connected. So अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्या वो कंपनी मोबाइल फोन्स बेच सकती है? नहीं बेच सकती. क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि अरे भाई उसका ऑब्जेक्ट है गारमेंट मैन्युफैक्चर करना. मोबाइल फोन्स गारमेंट से कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है. So a company has to abide by whatever has been stated in its object clause. It cannot go beyond the powers, beyond the scope, beyond the objective which has been specified in its object clause. And that's where object clause becomes very important, and that's where the doctrine of ultra-vires plays a very important role, which states that if a company does an act which is beyond its powers, which is beyond the objective with which it has been incorporated, such an act of the company would be null and void. That is, it would have no legal effect. So अगर एक कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो बियॉन्ड इट्स पावर्स है, बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो वाला काम सही नहीं होगा. डेफिनेटली नॉट. एंड इट विल बी नल एंड वॉइड. इट विल हैव नो लीगल इफेक्ट एट ऑल. क्लियर है? समझ में आया? Okay. The next clause is the liability clause. So liability clause name itself suggests क्या बताएगा? Details of the liability of members. Limited है, unlimited है, क्या है? Depending on the type of company. उसके बाद में आता है capital clause. Capital clause basically states different things. सबसे पहले तो it will state the authorized capital of the company. Authorized capital is the maximum amount which the company can raise. जो मैक्सिमम अमाउंट स्टेटेड होता है, जितना मैक्सिमम अमाउंट कंपनी रेज कर सकता है, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. So it is stated in the capital clause. Capital clause will state what is the authorized capital of the company. फिर उसमें भी the capital clause will specify कि authorized capital को कितने shares में divide किया गया है, how many shares, the face value of each share, everything will be stated in the capital clause. कि what is the authorized share capital, in how many shares is it divided, what are the different types of shares, and also the face value of share. Everything will be stated in the capital clause. So in case of company limited by shares, it will state the amount of share capital, the division of share, and share capital into shares of fixed amount, number of shares which the subscribers have agreed. So हर subscriber जो होता है ना memorandum का, they shall subscribe to at least one share. You're subscribing to the memorandum, तो एक शेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा. And the number of shares each subscriber to the memorandum intends to take. तो ये सारा चीज कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है कि
कितने शेयर्स है, टोटल कैपिटल कितना है, in how many shares is this capital divided, the amount of each share, how many shares are the subscribers to memorandum agreeing to subscribe to, and the number उसके उनके नाम के बाजू में लिखा होता है कि how many shares is this subscriber to memorandum subscribing to. एंड ओपीसी होता है तो ओपीसी में तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ इट कवर्स द नेम ऑफ द नॉमिनी who shall become the member in the case of death of the member of one person company. And then finally आता है subscription clause. It states the purpose of the subscribers to incorporate the company, wherein they agree to take the shares in the company based on the number written in the memorandum, and it contains the signature. So subscription clause basically last clause होता है जहाँ पे signature होता है of all the subscribers to the memorandum. Subscribers कितने होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7, और इन सबका सिग्नेचर होता है here in the subscription clause, and all the subscribers shall sign in presence of at least one witness each. The subscribers to the memorandum, when they are signing the memorandum of association, they shall sign the memorandum of association in presence of at least one witness each. So सबका एक अपना individual witness होना चाहिए. So these are the different clauses of memorandum of association. Any question, any doubt? समझ में आया? कोई doubt है? Any doubt? No doubt. So हमने क्या देखा अभी, 6 clauses of memorandum of association. What are these 6 clauses? Started with the name clause, which states the name of the company, and suffix क्या होना चाहिए, private company के केस में private limited, public company के केस में limited. Then comes the registered office clause or situation clause or the domicile clause, which states the name of the state in which the registered office of the company will be situated. Then comes the object clause, जो specify करता है object या फिर the purpose with which the company is being incorporated. Then comes the liability clause, which states the liability of members of the company, limited है, unlimited है, क्या है. Unlimited liability company के केस में ये liability वाला clause नहीं आएगा, unlimited liability होती है. And then comes the capital clause, which specifies the authorized share capital of the company, the division of authorized capital into the number of shares of fixed amount, how many shares are the subscribers to the memorandum subscribing to. All these details will be stated in the capital clause. And for last clause आता है subscription clause. Subscription clause basically will be the last clause जहाँ पे it is nothing but an authentication by all the subscribers to the memorandum, and their signatures will be present there in the subscription clause. और वहाँ पे when every subscriber is signing, they shall sign in the presence of at least one witness each. Every subscriber to the memorandum, he has to sign in presence of at least one witness each. So that is the subscription clause. Any questions, any doubt in whatever we've done till now? कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन होता ही नहीं है ना किसी को. Anyways, so we've understood what is memorandum of association. Talking about
Articles of Association, that is AO. So just like memorandum, Articles of Association भी एक public document है. तो जैसे मेमोरेंडम का एक्सेस मिल सकता है वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी एक्सेस मिल सकता है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर बायलॉज. इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए होता है. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है, लाइक वी हैव अंडरस्टूड, दे डिफाइन द relationship of company internally. Memorandum establish the relationship of company with the outside world, whereas when we are talking of articles of association, they determine the relationship of the company, they establish the relationship of company internally. The main focus of articles is on the internal management of the company. Okay, so they provide the rules and regulations and bylaws with which the company shall work. So let's now have a look at the definition of AOA. Definition of articles. So 2 clause 5 defines articles. It means the articles of association as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of previous company law or of this act. मतलब very simple. जो original frame क्या होगा वो, या फिर as altered from time to time. Articles का भी alteration possible है. हाँ, articles का भी alteration possible है, which we will understand in tomorrow's class. ठीक है. And just like there are different proformas for different formats for memorandum of association, similarly schedule 1 also prescribes the format for model articles. There are table F to table J which provides for formats of articles of association of different types of company, depending on whether it is a company limited by shares, company limited by guarantee, having share capital, not having share capital, unlimited company. So depending on the type of company, हम ये मॉडल आर्टिकल्स जो है वो उठा सकते हैं. वी कैन फ्रेम द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आवर कंपनी एज वेल. सो दीज आर द मॉडल आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड, व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड. Talking of the contents of articles, so they contain the regulations for management of the company. They contain matters which as are prescribed under the rules, and a company may also include some additional matters in AOA as are necessary for its management. So जैसा हमने समझा है that articles of association, they contain rules and regulations for the internal management of the company, and they may also contain any other additional matters which are necessary for the purposes of management of the company. So जो भी rules and regulations होते हैं which are necessary for management of the company, वो सारे articles of association में state किए जाते हैं. Is that clear? Now there's something called as entrenchment provision, which can be included in the articles of association, but we'll not start with entrenchment provision right now because वो समझने के लिए थोड़ा patience की जरूरत है और थोड़े ठंडे दिमाग की जरूरत है, fresh mind की जरूरत है. So we'll start with entrenchment provision tomorrow. So in tomorrow's session, we are going to discuss the entrenchment provision. Entrenchment provision of articles of association. उसके बाद we'll also discuss the doctrines, ultra wires, indoor management. ये दोनों doctrines हम discuss करेंगे. उसके बाद में we'll start with section 10A. Section 10A एक basic section है which has to be done. So section 10A करेंगे. Section 10A के बाद we'll talk of the authentication of documents of company, and we'll also understand how alteration of memorandum and articles of association can be done. Okay, so tomorrow's the main part of tomorrow's class would be alteration of memorandum of association and articles of association, and also entrenchment provision for that matter. So do not miss any lecture, and any doubts you can ask me right now. No question. Okay, that's great if you've clearly understood everything.
Okay, then, since you do not have any doubts or any questions, let's end the session here. And tomorrow we'll start with entrenchment provision, and we'll also understand alteration of memorandum and articles of association. Thank you.